हेलो मेरे दर्शकों, मेरा नाम है तनिष्क शर्मा। वेलकम टू माय रूम। आज है डे 18 ऑफ 30 डेज ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस सीरीज और थीम है ओपन अप। आज के सीक्वेंस में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत सारे बैक बेंड्स। दिस विल हेल्प इन रिलीजिंग स्टोर्ड इमोशंस। इमोशनल लेवल पर ओपन अप करते हैं, अपने फेयर पर ओवरकम करते हैं और ग्रेट पोस्चर्स में आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So from here, lie down on your abdomen. Place your forearms down. Feet slightly apart. Keep your fingers wide open. Elbow comes right under your shoulders. From here, press your palms into the mat. Lift your elbows off. Again, lift your elbows off. Easy bhujanga. Now again, elbows down, up, down, up, down, up, down, up, down. Now hold. 2, 3, 4, 5. Release up. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Now from here, tuck your toes. Downward facing dog. Adho Mukhasana Asana. Take a couple of breath here. 3, 4. Avoid this pepper. 5. From here, step your right foot forward in between your palms. Both the hands at your waist. Gaze forward. With exhale, your arms up. Hold it for a while. 2, 3. ओके, मैं आपको वेरिएशन दिखा रही हूँ. Now drop your knee down, both the hands at your thighs. Try to sink down. Too much pressure coming on left knee, fold your mat under your knee. And with every exhale, try to sink down. Your hips more and more with every exhale. Try to sink down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Release. Now with your left hand, reach your left shin. Right hand up. Same pose. And breathe. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Now next position is Anjaney Asana. Arms by the chest. Those of you are comfortable, arms up.
इफ स्टिल कंफर्टेबल लुक बैक। इसका दूसरा वेरिएशन भी है, शोल्डर्स रोल बैक, घुमा के हाथों को आगे लेके आओ एंड देन लुक बैक। 2 वेरिएशन है, जो भी आपको ठीक लग रहा है आप वो कर लीजिए। ब्रीथ नाउ। जितना हो सके, मुझसे इसमें 2 ही होते हैं। रिलैक्स योर लेग। Now tuck your toes, downward facing dog. Now step your, घुमा के दिखाती हूँ मैं तुम्हें। Now step your left leg in between your palms. First take initial couple of breath here. Left leg forward in between your palms. Right leg behind. Gaze forward. Hands at your chest. Those of you comfortable, hands up. Breathe there. 2, 3, 4, 5. Release. Drop your knee down. Take a couple of breaths here. 1, 2, 3, 4 and 5. Release. Slowly release. Once again, sink down, roll your right hand back behind on your shin. Left hands up and breathe. 1, 2, 3, 4 and 5. And relax. आप किसी भी तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब अंजनेय आसन करेंगे, जो भी वेरिएशन आपको पसंद है, ईदर रोल्ड बैक और अप या फिर नॉर्मली अप। मैंने सीधा से अपना वेरिएशन किया है, आप अपना कर लीजिए और यहाँ ब्रीथ कीजिए। Tuck your toes, downward facing dog once again. Breathe here. Adho Mukhasana Asana. Now from here, sit. Now from here, stand on your knees. Now we'll go for half camel. मैं आपको घूम के दिखाती हूँ. Right hand back, grab your right heel. Just like this and then we will change. तो फिर स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 1, 2. जिनके पैर में दर्द हो रहा है वो जैसे अभी मैंने टो रखे हुए थे अनटक्ड, वैसे भी रख सकते हैं, और जिनको जो परफेक्ट है वो मेरी तरह ऐसे करेंगे. चेंज, चेंज, राइट, left, hold. 1, 2, 3, 4, 5. Now change towards the right side. 1, 2, 3, 4, 5
slowly release. Now we'll sit in Virasana, heels out, hips in between both of them. Now sit and relax. Take a couple of breaths here. 1, 2, 3, 4, and 5. Stand once again. We also call it Ushtra Asana, camel pose. Grab your heel from your right hand and from the left hand. From both hands, grab your heels if comfortable. Only comfortable तभी अपनी गर्दन को नीचे झुकाओगे. I just demonstrated this. इसका दूसरा वेरिएशन मैं आपको बता रही हूँ. नहीं हो रहा है तो टक योर टोज. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. Both the hands at your waist, hips forward. With both the hands, grab your heels. अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही अपनी गर्दन को पीछे छोड़ना, कुछ इस तरह. अगर कंफर्टेबल हो तो 1, 2, 3, 4, 5. Slowly release. Again, sit in Virasana. Take a couple of breaths here. एक और सेट आप करेंगे मेरे साथ. 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स. फिर से आप वीरासना में बैठ जाएंगे कुछ टाइम. नाउ सेम पोजीशन लेकिन राइट लेग आगे. फ्रॉम हियर प्लेस योर palms behind, both the palms behind. Still comfortable. Elbows down. अगर comfortable हो तो ही elbows down. और अभी भी comfortable हो तो try to lie down properly. आपके left thighs में बहुत stress आने वाला है. And breathe here. Four and 5. उसके बाद completely lie down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Release. From here, first on your elbows, then on your palms. एकदम से नहीं आना, नहीं तो गर्दन वो गिर जाएगी, नाभि गिर जाएगी. From here, whichever part you can reach, shin, big toes, legs, whatever. Inhale, spine up. Exhale, forward fold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Slowly release. Relax
From here, right knee out. Right heel out. Both the hands behind, just like earlier. And breathe. If comfortable, elbows down. If comfortable, तो पूरी तरीके से नीचे लेट जाइए और breathe. 12, 6, 7. बहुत ज़्यादा स्ट्रेच महसूस होगा आपको राइट हैमस्ट्रिंग में. एंड स्लोली रिलीज. पहले अपने एल्बो पे फिर अपने पाम्स. नाउ फ्रॉम हियर ग्रैब योर बिग टोज, शिन, हैंड्स, what जहाँ तक भी आप पहुँच पा रहे हैं आपके हाथ. Inhale, lengthen up. Exhale, forward fold. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Come up. Now in your own time, lie down on your spine. Keep your both the knees bent. Both the knees on right side. Head on left side. Jaldi karo. Hands by the shoulder, by the side of shoulders. Breathe. Release. Both the knees towards the left, hands and head towards the right. Breathe. Now release your legs into Shavasana. Do not hold to anything. Feel your abdomen. Let's each body part breathe. Compare the difference between how you have started and how you are ending up. Initially your minds were full of thoughts, now it is calm and composed. I'm talking about mine, not yours. You have to analyze and let me know in my comments.